Assalamu alaikum everyone, welcome back to learn with Nadia, welcome back to another lesson। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अदर वेज टू से कंग्रेचुलेशन। यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां आप अगर कंग्रेचुलेशंस नहीं बोलते तो आप इन वर्ड्स को बोल सकते हैं, जो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। ये 22 वर्ड्स हैं, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं जो हम अगर बोलें तो हम मुबारकबाद इन अंदाज से भी दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज इंग्लिश लर्निंग लेसन। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वेल डन। वेल डन। नेक्स्ट है फंटास्टिक। Fantastic, wow, fantastic. Hats off. Actually, hats off used to give credit to someone for doing such a great job. Hats off. Hats off. Nice way. Next है you really deserved it. You really deserved it. Next है good for you. Good for you. Next है what a good toy. Wow, what a good toy. Nice. Next है that's the best ever. That's the best ever. Next है that's the way. That's the way. You have got it. You have got it. Got it. You are the genius. अगर आप कंग्रेचुलेशंस नहीं कह रहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। नेक्स्ट है यू डिड इट। यू डिड इट। यू डिड दैट वेरी वेल। यू डिड दैट वेरी वेल। मैनी हैप्पी रिटर्न्स। Many happy returns. Many happy returns. I am impressed. I am impressed. Good on you. Good on you. You rock. You rock. Nice going. Nice going. Good job. Good job. Way to go. You can say way to go to show that by something someone has done कि आप बहुत खुश हैं उससे, ठीक है। Respects. Respects. Sensational. Sensational used to tell someone that he has done something very well. So guys, that's it for today's lesson. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe to my channel, activate the notification bell so you never miss any of my video. अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होना है और किस सिचुएशन में हमने कौन सा सेंटेंस बोलना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।